During this Mass, we remember and pray for the following intentions. For the soul of João Mariano de Souza, being second death anniversary. For the soul of Winnie William de Souza. For the soul of Victor C. Pace. For the soul of Basil Angelo. For the soul of Marie Almeida. For the soul of Sucor de Silva. For the soul of Philogen Godino. For the soul of Custodio Fernandez. For the soul of Xavier Fernandez. For the soul of Margaret Machado. For the soul of Ashok Shivaji Surve, two intentions. For the soul of Joseph de Souza, two intentions. For the soul of Faustina Severina de Souza, two intentions. For the soul of Lawrence Godino. For the soul of Joseph and Lucy Braganza. For the soul of Anthony and Paulina de Souza. For all souls of de Souza family. For the deceased members of Pereira family. For the deceased members of Paul family. For the deceased members of Rikai family. For the deceased members of de Souza family. Thanksgiving to Our Lady of Forsaken, three intentions. Thanksgiving to Holy Trinity. Thanksgiving to Our Lady of Velankani. And thanksgiving to Our Lady of Forsaken for Esperance Pereira's birthday. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Once again, welcome, my dear brothers and sisters, to this online Mass. Today, the Lord has something to tell us about marriage. विवाह के बारे में ईश्वर का ये सोच है, ईश्वर ने ये पवित्र बंधन बनाया है। प्रार्थना करते हैं मीसा बलिदान में हर एक कपल्स के लिए, मियाँ बीवी के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, हमेशा के लिए हस्बैंड एंड वाइफ प्यार से रहने के लिए, मैरिज सक्सेसफुल होने के लिए, हैप्पी मैरिज के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज का दिन हम लोग धन्यवाद देते हैं ईश्वर को। टुडे इज अ थैंक्सगिविंग डे। लेट अस थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। Mass itself is a thanksgiving to God through Jesus Christ. पापों का याद करते हैं, क्षमा मांगते हैं। Let us especially couples, husband and wife. Pause for a while. Ask yourself, are you giving everything to your partner, to your spouses? You made a commitment to God on the first day of the marriage. Good time, bad time. Are you faithful? Are you committed? Let us ask forgiveness from the Lord and ask the Lord to bless the union. And for any other sins that comes to our mind, we ask forgiveness from God and say together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault,
through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, bring us to everlasting life. Amen. Lord, Lord, Lord have mercy, Lord have mercy. Christ, Christ, Christ have mercy, Christ have mercy. Lord, Lord, Lord have mercy, Lord have mercy. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, O God Almighty Father. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world. Have mercy on us. You take away the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit in the glory of God the Father. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Let us pray. Almighty ever-living God, who in the abundance of your kindness surpass the merits and the desires of those who entreat you, pour out your mercy upon us to pardon what conscience dreads and to give what prayer does not dare to ask. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. The Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helpmate." So from the soil the Lord God fashioned all the wild beasts and all the birds of heaven. These he brought to the man to see what he would call them. Each one was to bear the name the man would give it.
The man gave names to all the cattle, all the birds of heaven, and all the wild beasts. But no helpmate suitable for man was found for him. So the Lord God made the man fall into a deep sleep. And while he slept, he took one of his ribs and enclosed it in flesh. The Lord God built the rib he had taken from the man into a woman and brought her to the man. The man exclaimed, "This at last is bone from my bones and flesh from my flesh. This is to be called woman, for this was taken from man. This is why a man leaves his father and mother and joins himself to his wife, and they become one body." The word of the Lord. Thanks be to God. May the Lord bless us all the days of our life. May the Lord bless us all the days of our life. Oh, blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. By the labor of your hands you shall eat. You will be happy and prosper. May the Lord bless us all the days of our life. Your wife will be like a fruitful wine in the heart of your house. Your children like shoots of the olive around your table. May the Lord bless us all the days of our life. May the Lord bless us all the days of our life. A reading from the letter to the Hebrews. We see in Jesus one who was for a short while made lower than the angels and is now crowned with glory and splendor. Because he submitted to death, by God's grace, he had to experience death for all mankind. As it was his purpose to bring a great many of his sons into glory. It was appropriate that God, for whom everything exists and through whom everything exists, should make perfect through suffering the leader who would take them to their salvation. For the one who sanctifies and the ones who are sanctified are of the same stock. That is why he openly calls them brothers. The word of the Lord. Thanks be to God. Praise be
Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Some Pharisees approached Jesus and asked, "Is it against the law for a man to divorce his wife?" They were testing him. He answered them, "What did Moses command you?" "Moses allowed us," they said, "to draw up a writ of dismissal and so to divorce." Then Jesus said to them, "It was because you were so unteachable that he wrote this commandment for you. But from the beginning of creation, God made them male and female. This is why a man must leave father and mother, and the two become one body. They are no longer two, therefore, but one body. So then, what God has united, man must not divide." Back in the house, the disciples questioned him about this, and he said to them, "The man who divorces his wife and marries another is guilty of adultery against her. And if a woman divorces her husband and marries another, she is guilty of adultery too." People were bringing little children to him for him to touch them. The disciples turned them away. But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, "Let the little children come to me. Do not stop them, for it is to such as these that the kingdom of God belongs. I tell you solemnly, anyone who does not welcome the kingdom of God like a little child will never enter it." Then he put his arms around them, laid his hands on them, and gave them his blessing. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. God was the first matchmaker. ईश्वर ने आदम को रिश्ता लाया। वो एक बुनियाद ईश्वर ने डाल दिया मैरिज के लिए, विवाह के लिए। When a young man and woman get married, or the partner they got it through love, they know personally each other, or through arranged marriage. What is important is marriage. लव मैरिज, अरेंज मैरिज में काफ़ी कभी कभी मुश्किलें आती है। फिर भी याद रखना है, जब हम इस पवित्र बंधन को ईश्वर को साक्ष रखकर हम लोग शादी करते हैं, तो याद रखना है हम लोग ने वचन दिया है, जो कमिटमेंट हम लोग ने किया है ईश्वर के सामने, लोगों के सामने, भूलना नहीं। And so God had this in mind, the sacred bond between husband and wife. At times there is a friction between husband and wife. ये जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो दरार आ जाता है, ये हस्बैंड एंड वाइफ प्यार करने के बावजूद भी काफ़ी सालों बाद वो शादी करते हैं, फिर भी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी कभी। या अरेंज मैरिज में ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ लव मैरिज टिकता है, अरेंज मैरिज नहीं टिकता, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सोचना है हम सभी को, दोनों के बीच में समझौता होना है।
अब शादी करते हैं तो दोनों मिल के आगे बढ़ना है। अभी भी मेरे को सोच समझ में नहीं आ रहा है, जो व्यक्ति, दो हस्बैंड एंड वाइफ प्यार में पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, और प्यार के समय पार्टनर को भी प्रॉमिस करते हैं, तारे तोड़ के लाऊंगा आपके लिए, ये करूंगा वो करूंगा। जो प्यार करने वाला बंदा हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जब दरार गिर जाता है तो दुश्मनी कैसा बदल जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? आई कैन अंडरस्टैंड इट। द पर्सन whom you love, ready to sacrifice your life, and suddenly that person becomes the number one enemies in your life. क्यों? क्या? ये त्याग पत्र, डिवोर्स का रेट थोड़ा बढ़ते जा रहा है, और हम लोग कैथलिक लोगों के लिए ये जरा सोच के आगे बढ़ना है। शादी के लिए ज्यादा करके, खास करके हम युवा के लिए ये मैसेज है, द चर्च डज नॉट अलाउ डिवोर्स। हमारे धर्म में, कैथलिक चर्च में आज का जो वचन है इसके ऊपर टिका हुआ है। फरीसी आके प्रभु यीशु को बोलते हैं, अब क्या बताना चाहते हैं, त्याग पत्र देना है क्या नहीं, डिवोर्स करना है क्या नहीं? मूसा ने क्या बोला है? मूसा बोलते हैं छोड़ सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। पुराना करार है, प्रभु यीशु बोलते हैं। मतलब ये आपका कठोर हृदय के वजह से मूसा ने ये आपको ये परवानगी, परमिशन दे दिया छोड़ने के लिए, लेकिन ओरिजिनल प्लान ईश्वर का यही था, आदमी और स्त्री को ईश्वर जोड़ता है, दो एक हो जाता है, उसे किसी को भी तोड़ने के लिए ताकत नहीं है। प्रभु यीशु दोबारा दोहराते जो ओरिजिनल प्लान था ईश्वर का। कैथलिक चर्च ये प्रभु के शब्द लेके आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं प्रभु यीशु ईश्वर स्वयं, शुरुआत में जो पृथ्वी ईश्वर ने बनाया, शुरुआत में आदम के लिए पार्टनर चुना, प्लान था ईश्वर का, मैरिज के लिए फाउंडेशन डाला, और दोबारा ईश्वर मनुष्य के रूप में आते हैं, दोबारा बोलते हैं नहीं, जो कुछ भी हुआ बीच में मूसा द्वारा जब टेम्पररी था त्याग पत्र देना, लेकिन अभी इसके बाद नहीं। और दोबारा दोहराते ईश्वर ने पहले बार क्या बोले, जब पार्टनर लाया, फर्स्ट मैरिज दैट ही मेड बिटवीन हस्बैंड एडम एंड ईव, जीसस सेज दैट इज द प्लान ऑफ गॉड, दैट व्हाट गॉड हैज जॉइंड टुगेदर नो वन शुड सेपरेट। उसका मतलब सोच समझ के आपको, हम लोग को आगे बढ़ना है। जो शादी करते हैं, जब अगर शादी करते हैं तो टिकना है, कुछ भी हो आगे तक लेके जाना है, ना कि तुरंत जंप करना है और बोलना नहीं हमको छोड़ना है हमारा पार्टनर को। ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट दैट इजी, दैट डिवोर्स इज नॉट देयर इन होल थिंग इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चर्च। इट्स अ सेक्रेट बॉन्ड। और जब ईश्वर ने पहला वचन में तो आदम के लिए पार्टनर ढूंढ रहा था, हर एक जानवर को लेके आए, कोई भी जानवर, कोई भी जो था सही नहीं था, ईश्वर अपना आदम के लिए खाली एक सही स्त्री लाकर दे दिया, तब खुश हो गए। सो द मैरिज इज बिटवीन मैन एंड वुमेन, ना कि आदमी आदमी, औरत औरत के साथ नहीं। स्त्री और पुरुष के बीच में शादी बोला जाता है। तो चर्च अभी भी वही लेके आगे बढ़ रहा है। संसार कुछ भी बोले, लेकिन ये है परिवार चालू करने के लिए। आपको कुछ बताना चाहता हूं मैं। काफी जगह ऐसा नया नया स्टोरी सुनने को मिलता है, जब जो दो स्त्रियों ने जहां पर परमिशन दिया है शादी कर सकते हैं, बच्चा तो नहीं होगा, एडॉप्ट किया बच्चे को, बच्चा बड़ा हो गया,
बच्चा ने सवाल उठाया, आपने मुझे गोद लिया, आपको जैसा लगा आपने किया, किसी ने मुझे पूछा नहीं मुझे पापा का प्यार चाहिए या मम्मी का प्यार चाहिए, मुझे दो मम्मी का प्यार नहीं चाहिए, पापा और मम्मी का, मदर एंड फादर लव आई वांटेड। आप लोग कौन होता है मेरे ऊपर, मेरा बारे में सोचने के लिए? गलत साबित किया दो स्त्रियों का शादी, दो आदमियों का शादी। यू कांट डू दैट। द प्लान ऑफ गॉड इज वेरी क्लियर, मैन एंड वुमेन वन एंड इट्स एक्सक्लूसिव। हमारा धर्म बोलते हैं शेयरिंग करो, जो कुछ भी है शेयर करना है, प्यार करना है, लेकिन इस मामले में शेयरिंग नहीं है। एक ही स्त्री एक ही पुरुष, ना कि आप दो स्त्री के साथ शादी करते, दो पुरुष के साथ शादी करते। नो, इट्स एन एक्सक्लूसिव यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन। तीसरा, जो बंधन पवित्र है, खुद मियां बीवी भी तोड़ नहीं सकते, कोर्ट भी तोड़ नहीं सकते, चर्च भी तोड़ नहीं सकते। देयर इज नो डिवोर्स इन द कैथोलिक चर्च। दैट्स व्हाट जीसस सेड। He brought back the sacredness of the union between husband and wife. अगर आपको आगे बढ़ना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है, नहीं तो आगे मत बढ़िए। It's a commitment, it's a real serious commitment between husband and wife if they are getting married in the presence of the Lord, and that is a sacrament you cannot break. प्रभु यीशु वही बताते हैं इनको, जो लोग पूछ रहे थे डिवोर्स देना है क्या, ना। चर्च भी वही लेके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो बोलने के बाद शिष्य उनको पूछ रहे प्रभु यीशु को, तभी बच्चे लोग आते हैं, बच्चे के ऊपर आशीर्वाद हाथ डाल के आशीर्वाद देते हैं। मार्क आज का जो गॉस्पेल राइटर है, क्यों ये सब बता रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा असर डिवोर्स का बच्चे के ऊपर होता है। मियां बीवी तो झगड़ा करेंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन बच्चे के लिए कौन पूछने वाला है? बच्चे को पूछेंगे तो आप बोलेंगे, बच्चा बोलेगा मेरे को पापा भी चाहिए, मम्मी भी चाहिए, या आपस में आपका प्रॉब्लम है, बच्चे को अलग नहीं कर सकते। And also the consequence of the divorce is the child has to bear. It's affecting the child. बच्चे के ऊपर असर हो रहा है। हर एक बच्चे को वो वातावरण चाहिए परिवार में। Needs a shelter, bringing up in the love of father and mother. He needs that, every child. And so sometimes we become so selfish कि हम लोग बच्चे के बारे में नहीं सोचते, हम खुद के बारे में सोचते हैं। मैरिज वो नहीं होते, मैरिज मतलब त्याग, सैक्रिफाइस। मियाँ ने बीवी के लिए सैक्रिफाइस करना, बीवी ने मियाँ के लिए सैक्रिफाइस करना है, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, आपस में। लव उसे बोलते हैं। लव ये नहीं क्या आपने वाइफ को सर्वेंट बनाया, वाइफ ने हस्बैंड को सर्वेंट बनाया। प्रपोजल आपको आप देखते हैं, अब आजकल तो ऑनलाइन चलते हैं प्रपोजल लाना। आपका क्या रिक्वायरमेंट है? अभी जो शादी करने वाला लड़का या लड़की, ये चाहिए, ऐसा लड़की चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, ये चाहिए। परफेक्ट आदमी आपको मिलेगा? परफेक्ट औरत आपको मिलेगा लेडी? नहीं। जो कोई भी हो, नहीं तो आपको, अगर आपका हिसाब से आपको चाहिए, देन यू हैव टू बिकम अ गॉड, और यू मैरी अ रोबोट or animal who can obey you. जिससे आप शादी कर रहे हैं इंसान है। It's a person who has an emotion, who has a feeling, and not every time that person, your partner, will make you happy. तो ये सोच के आगे बढ़ना है। क्या गलती सामने पार्टनर से भी हो सकता है, गलती मेरे से भी हो सकता है। अगर मैं पूछ रहा हूं मेरे को इस तरह का पार्टनर चाहिए, आपने कभी आपको सवाल किया है क्या सामने वाला क्या चाहते हैं आपसे? इट्स ऑलवेज टू वे। सो आई कैन नॉट बी परफेक्ट, नहीं तो माई पार्टनर कैन बी परफेक्ट। सो दैट इज यू हैव टू थिंक एंड गो अहेड इन द मैरिज।
If you want a life partner to settle down, then see that it's a real serious commitment. शादी करना सब लोग शादी करते हैं, बिजनेस सब लोग चालू करते हैं, फादर बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए सब लोग जाते हैं, सब कुछ चालू करना आसान है, उसको मेंटेन करना दैट इज वेरी चैलेंज. जो कदम हमने आगे बढ़ाया उसको संभाल के आगे बढ़ाना, आगे जाना, दैट इज व्हाट इज चैलेंजिंग. मेंटेनिंग माय मैरिज. शादीशुदा जिंदगी में उठाव चढ़ाव रहता है, बट I still have to be committed, that I don't jump and say I want to separate. सोच समझ के आगे बढ़ो. चर्च ये भी जानते हैं, very motherly affection the church has for the children, for those who are separated. कभी कभी abusive husband मिल जाता है, पीने वाला, मारने वाला, कितना सहन कर सकती है. कभी ऐसा मामला भी आ जाता है, सिचुएशन आ जाता है, अलग हो जाती है. इट्स अ पेनफुल, इट्स अ रियलिटी. द चर्च अंडरस्टैंड दैट, बट चर्च ऑल्सो अप्रिशिएट दोज पार्टनर छोड़ के चले गए, फिर भी ये पार्टनर बच्चे के लिए दूसरा शादी नहीं की. डिवोर्स नहीं है, मतलब पार्टनर जीवित होने के बावजूद भी आप दूसरे के साथ में शादी कर रहे हो, गलत है. बंधन कब टूट जाता है? जब एक पार्टनर का अंत हो जाता है. दैट इज नो बॉन्ड. So when your partner is alive, you are getting involved with another partner, then that is such sin of adultery. इसलिए प्रभु यीशु ने बोला पाप है, गलत है. So you cannot break the bond, sacred bond. तो ये प्रभु यीशु का सोच है, कैथोलिक चर्च का भी सोच है. तो हम ये आगे सोच के आगे बढ़ना है. अगर हम कदम उठाते हैं युवा के लिए ज्यादा करके, एंड देन व्हेन आई मेक अ कमिटमेंट टू एंटर इनटू दिस बॉन्ड, आई शुड बी फेथफुल टू वन पार्टनर. ये सोच क्लियर रखना है हम लोग को, एंड वी हैव टू गो अहेड. एंड सो चर्च is grateful and happy, and then church is encouraging those partners who have been faithful to the marriage, even though one partner has ditched that person and gone away. There are examples given by so many people. The church upholds this marriage, institution of marriage. तो युवा को यही सोच के आगे बढ़ना है. If you are entering into this commitment, seriously enter into this commitment. आपको बुलावा नहीं है मैरिज लाइफ में, मत आगे बढ़िए. यू कैन नॉट टेक अप दिस कमिटमेंट बिकॉज द डिवोर्स रेट इज गोइंग हाई. और हमारे चर्च में डिवोर्स नहीं है. मैरिज इज अ बुनियाद, विवाह बुनियाद है, फाउंडेशन है. बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता का प्यार देख के बच्चे उस प्यार में आगे बढ़ते हैं. सो फैमिली शुड बी हैप्पी फैमिली. You may be the son and daughter, father, mother, कोई भी हो सकते हैं. आज का जो विषय है परिवार से जुड़े हुआ है, और आज का दिन है धन्यवाद देने का दिन है. जो कुछ भी हो, ईश्वर को धन्यवाद देना है. दुख तकलीफ सब कुछ है, फिर भी ईश्वर को भूलना नहीं है. जो कुछ भी है, हम लोग जीवित है, जो कुछ भी है हमारे पास है, वो ईश्वर के बदौलत है. एंड सो वी नीड टू बी ग्रेटफुल टू गॉड. And always the Eucharist is a thanksgiving. The meaning of Eucharist is thanksgiving. तो हमेशा मीसा बलिदान में हम भाग लेते हैं. सोच यही है चर्च का, कलीसिया का, कि हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मीसा द्वारा. धन्यवाद देना मतलब हर एक स्थिति में, दुख के समय, अच्छे समय धन्यवाद, क्योंकि ईश्वरी हमारे जीवन में कंट्रोल में है. उसे पता है अच्छा को बुरा करना है, बुराई होता है जो हमारे जीवन में, उसे ताकत है ईश्वर को बदलाव लाने के लिए, बदलने के लिए. और दैट इज व्हाट आवर फेथ इज ऑल अबाउट, दैट वी बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड ऑलवेज लिव. और ये रिसर्च भी किया हुआ है, अगर आप धन्यवाद दे के जीवन जीते हैं, आप हैप्पी होंगे.
In everything can you have that perspective of thanksgiving. जो कुछ भी हो रहा है अगर आप सोचते हैं अच्छाई के लिए हो रहा है, आपका जीवन में हैप्पीनेस आता है. So let us pray and ask the Lord and pray in especially for the marriage, for the young couple and for the youth, that they may make a right choice. And if they make a right choice of settling down with the partner in the marriage, they keep and they are faithful to that commitment. Amen. Let us all stand and profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Marriage is the foundation of the family. Let us bring before the needs, our needs of the family, the couple, and also of the whole world. Our response is, Lord, hear our prayer. All together. Lord, Lord, hear hear our our prayer. prayer. For our Holy Father, Pope Francis, bishops, priests, religious and lay faithful, that they may never tire of upholding the principles that govern Christian marriage and help those couples who are struggling in their married life. We pray to the Lord. Lord, Lord, hear hear our our prayer. For all married couples, that they may experience the joys of love and unity which lead them to respect each other, and that they may have the courage to weed out whatever disturbs a healthy relationship. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all children, that they may be seen as precious gifts that come from the hand of God, thus enabling them to grow up in family and society, experiencing the freedom and respect they need. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all of us here present, that the Eucharist we celebrate may strengthen us to build holy Catholic families where there is love and understanding in our homes, thus making us true witnesses in a world that often fails to uphold these values. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. God, Heavenly Father, we ask you to protect all the married couple. Be with them, Lord, in this world where there is counter values are given and our couples especially find it difficult. We ask you to protect them from the influence of the world and that they may be witnesses to the other couples. Bless them, bless their marriage and bless their families. We make this prayer to Christ our Lord. Amen.
Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have this bread to offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have this wine to offer you. Fruit of the vine and work of human hands, it will become for us our spiritual drink. Blessed be God forever. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the sacrifices instituted by your commands, and through the sacred mysteries which we celebrate with dutiful service, graciously complete the sanctifying work by which you are pleased to redeem us through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you came to aid of the mortal beings with your divinity and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Oswald Gracious our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom and power, glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostle, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. All I ask of you is forever to remember me as loving you. All I ask of you is forever to remember me as loving you.
Let us pray. Grant us, Almighty God, that we may be refreshed and nourished by the sacrament which we have received, so as to be transformed into what we consume through Christ our Lord. Amen. Please sit for the announcement. Sunday announcements. With the opening of churches, weekday masses will resume from Thursday, the 7th of October at 6:30 p.m. Since we are allowed to operate at 1/3 capacity of the church, we will have 3 masses to facilitate parishioners to fulfill Sunday obligation. Saturday, it will be at 7 p.m. and on Sunday, 2 masses at 8 a.m. and 9:30 a.m. All protocols will be observed very strictly, like social distancing, wearing a mask, etc. Parishioners are requested to cooperate and follow the instructions of the ushers. As a precautionary measure, senior citizens are requested to refrain from coming to the church, so also children below the age of 10. By the grace of God, following couple intend to get married. This is the second band of Randall Gudino, bachelor, son of Rock and Marceline Gudino, residing at Gaikwad Nagar, Malvani, Malad West, and Clarinda Dias, spinster, daughter of Carmelo, and Bertha Dias, residing at Orlem, Malad West. If there is any reason why this couple should not be joined in the sacrament of matrimony, you are bound in conscience to report to the parish priest as early as possible. हम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, मीसा हम लोग अभी चर्च में शुरू कर सकते हैं, तो हम लोग ने सोचा है 7 तारीख से गुरुवार है, माँ मरियम का त्यौहार है और अच्छा मौका है मीसा करने के लिए चर्च में. सो आवर फर्स्ट मास, फिजिकल मास इन द चर्च विल बी ऑन 7th, दैट्स ऑन थर्सडे, वीकडे मास. आपको याद होगा, अभी लोग ने भूल गए होंगे कितना बजे का मास होता है. सो इट इज़ एट 6:30, राइट? 6:30, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी. हाँ, तो ये ब्रेक आने में थोड़ा सा ये हो जाता है, हाँ याद दिलाना पड़ता है. और संडे का मीसा हम लोग चालू करेंगे शनिवार से. तो शाम का मीसा इंग्लिश में होगा शनिवार को 7 बजे, मॉर्निंग में संडे का होगा 8 बजे और 9:30 बजे. 3 मीसा है, लेकिन गवर्नमेंट ने, हमारे बिशप ने बोला है सभी को एक ही साथ में नहीं लाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क पहन के आना है, सब कुछ करना है जैसा हम लोग कर रहे थे पहले. तो प्लीज़ वेयर योर मास्क एंड कम. ओके, हमारा आशर्स लोग रहेंगे, यूथ रहेंगे जरा चेक करने के लिए, तो संभाल के रहना है हम सभी को. ओके, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. सो वी बिगिन आवर मास ऑन 7th. हमारा पेरिस काउंसिल मीटिंग होगा, हम लोग तय करेंगे कौन सा जोन आना है सैटरडे, कौन सा जोन आना है संडे. तो आप लोग समझ सकते हैं. सो बी पेशेंट एंड डोंट से एंड क्वेश्चन एंड सेइंग व्हाई दिस जोन फॉर दिस मास, व्हाई डोंट फॉर दिस मास. बी ग्रेटफुल. संडे आज धन्यवाद देने का दिवस है. सो बी ग्रेटफुल दैट एटलीस्ट वी आर गेटिंग द मास. You just can't say, I want to come for this mass, I want to come for this mass, because we have to see also, we have to follow the protocol also, we have to see that, social distance maintain किया हुआ है. So हमारे पैरिस काउंसलर आपको बोलेंगे आपका जोन कौन सा मास को आना है. कोशिश करिए वो मिसा में आने के लिए, ताकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे चर्च में और मिसा करेंगे. ओके, एंड सो मैं आशा करता हूँ, विश्वास है, प्रार्थना करता हूँ, ये हमारा ऑनलाइन मिसा लास्ट मिसा होगा. ईश्वर हम सभी को रक्षा करे, दोबारा वायरस दिखाई नहीं देना चाहिए. ये लास्ट ऑनलाइन मिसा होना चाहिए. और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ प्रशांत और लीना को
faithfully they are coming and shooting, recording, and then editing and all that thing. We only pray that जो मिसा करने को गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, ये लॉकडाउन खुला हुआ है, हमारे नाताल फीस तक, क्रिसमस तक रहना चाहिए, नहीं तो बाद में न्यूज़ आएंगे बोलेंगे नहीं दोबारा केस बढ़ गया, बंद करो. So let us pray and ask the Lord to protect us, that we too also can celebrate our own feast at the end of the year, Christmas and New Year. Let us all stand for the final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God.